Now, in the last class, what we talked about was the eye. We started off with the basic structure of the eye. और हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास the eye basically has three layers. We have a layer called as the sclera. That's a tough fibrous layer. The whites of the eyes basically. The sclera basically provides protection to the eye, but as it comes into the front, it forms a transparent extension, allowing the light to enter. And that transparent extension of the sclera is called as the cornea. Then the layer right underneath the sclera was a choroid, and choroid was a pigmented layer of blood vessels. And as it came in the front, it formed two structures made up of smooth muscles. The very first thing it made was a ciliary body, out of which the suspensory ligaments came out, and these suspensory ligaments they hold the lens. While in the front, it formed a body or a highly pigmented body that we call as the iris. That's the colored part of the eye. Between the iris, there's a space to allow the movement or the entry of light, and that's the pupil. Then the third layer that we had was the retina. The retina is a photosensitive layer. Photosensitive का मतलब क्या हुआ कि भाई it would be sensitive to light, and it contains two receptors that were called as rods and cones, right? The maximum concentration of the rods and cones in the retina are present at a point that we call as fovea. So it's the point where the sharpest image is formed. ठीक है? The place where the optic nerve extends out वहाँ कोई retina नहीं है, and hence हमारे पास ये जो जगह है यहाँ पर कोई image form नहीं होगी, and this is what we're going to call as a blind spot. ठीक है? अच्छा, फिर आखिरी बात हम लोगों ने क्या करी थी कि I think one of you asked me, Abdullah asked me, I think, okay, sir, why does the eye not get out of the what we call as the socket? It's because it's held by this particular layer of muscle that we call as a conjunctiva. ठीक है, वो eye को attach रखता है. Uh, so this was the structure of the eye. बस एक आखिरी बात. Your eye is swollen, right? ये पूरा empty space है. ठीक है? Empty space as in के मतलब इसमें कोई structures नहीं है, but it does have something that gives the shape to the eye. ठीक है? This particular shape of the eye that is given to that is formed is because of a jelly like fluid filled inside of it. अगर हम लोग eye को squish करेंगे ना, तो this jelly like fluid is going to come out. This jelly like fluid that is present in all of this medium right here, that is making the eye get all bulged out, it is called as the vitreous humor. ये ओ आर वाला ह्यूमर है, ओ यू आर वाला ह्यूमर नहीं है. ठीक है? Now, similarly, we have a watery fluid right here, that pretty much acts the tissue fluid, allowing the exchange of the substances. And this fluid that's present inside the cornea, it's watery and is called as aqueous humor. ठीक है? Aqueous humor कैसा fluid होता है? Aqueous humor is a watery fluid. ठीक है? Now that so this is pretty much about the structure of the eye. Now that we know the structure of the eye, हमारे पास बस इस चैप्टर में तीन चीजें बची हैं आसान आसान सी. सबसे पहले the very first thing that we're going to talk about is the control of entry of light. देखो मेरे बच्चे लोग, एक बात याद रखिएगा. At the end of the day, light still is a radiation. We don't want excess of it to get into the retina and damage it, right? So whenever the light intensities are going to be high, we are going to need to prevent that excess light from getting in. ठीक है? अब होता क्या है हमारे पास दो कंडीशन सेटअप होती हैं. एक होती है हाई लाइट इंटेंसिटी, right? For example, you're in a brightly lit room, or you are somewhere out in the sun. और हमारे पास लो लाइट इंटेंसिटी होती है. For example, you're going to bed, right? And right before going to bed, you turn the lights off. तो क्या होता है? The room becomes pitch black.
बट थोड़ी देर बाद वी कैन एक्चुअली मेक outlines of the furniture, of the chair, of the bed, of your tables, of your cupboards, right? If somebody is going to walk in, you can actually see their silhouette. तो हमारे पास होता क्या है, हाई लाइट इंटेंसिटीज के अंदर हमारा जो प्यूपल होता है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। और लो लाइट इंटेंसिटीज में टू अलाउ मोर लाइट टू गेट इन, द प्यूपल व्हाट, द प्यूपल स्टार्ट्स टू डायलेट, ठीक है। कहने का मकसद क्या हुआ, अगर मैं यहाँ इसको बनाऊं, चलो बस ब्लू, हम तो क्या देखते हैं कि हाई लाइट इंटेंसिटीज के अंदर हमारा जो प्यूपल होता है वो कैसा हो जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, राइट। सो दिस राइट हियर इज द प्यूपल एंड दिस पार्ट राइट हियर इज द व्हाट, इज द आइरिस। कहने का मकसद क्या हुआ, हम लोग आई को यूं देख रहे हैं, right in the front. So this colored part of the eye that we see is is the iris, और the बीच वाला part है वो हमारे पास क्या है, that's the pupil, ठीक है। अच्छा जी, लेंस उसको फ्लिप कर देता है, that's the thing। अच्छा खैर, जो लेंस से इमेज बनती है ना वो फ्लिप हुई हुई होती है। अच्छा जी, और अगर हम लोग लो लाइट इंटेंसिटी में देखेंगे तो हमारे पास जो प्यूपल होगा वो डायलेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई, इन द हाई लाइट इंटेंसिटीज द प्यूपल्स constrict, while in low light intensity the pupil dilates, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ टू मसल्स। हमारे पास दो मसल्स होते हैं एंड दे वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर। we have circular muscles and the other group of muscles that we have are called as the radial muscles, ठीक है। अच्छा, अब assuming this is going to be better, हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मेरी फिंगर्स है, assuming they are the circular muscles, right? तो मुझे जल्दी से बता दो, जब when I'm contracting my fingers, what's happening to the space in between? For example, this space in between is the pupil, right? So when I'm contracting my circular muscles or the fingers, what's happening to the pupil? Is it dilating or is it constricting? हाँ भाई, whenever we are contracting the circular muscles, is the pupil dilating or is it constricting? It's constricting, ठीक है। pupil हमारा क्या हो रहा है, constrict हो रहा है, very good। So what happens is, whenever these circular muscles they contract, the pupil constricts, and when these circular muscles relax, the pupils dilate, ठीक है। बस हम इतनी सी बात याद रखनी है। yes, both of them are smooth muscles better because they're involuntary, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। For example, I don't know if you could see it or not, but let's say if I'm going to bring the torch right next, very near to my pupils, the pupils मेरे बिल्कुल constrict कर जाएंगे, right? I don't know if you could see it or not, but as soon as I'm going to remove them, the pupils are going to dilate once again, ठीक। तो ये again involuntary, मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली अब जो मेरे पास रेडियल मसल्स होता है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। दैट्स बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन, हम लोगों ने पढ़ा था एड्रेनलिन भी हमारे पास स्मूथ मसल्स वो आयरिस वो पीपल्स को डायलेट करवाता है। खैर, अब जो दूसरे वाले मसल्स हैं वो रेडियल मसल्स हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेडियल मसल्स कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और अगर हमारे पास सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो यही वाले रेडियल मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस।
ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, व्हेन द प्यूपल्स वुड बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, रेडियल मसल्स क्या करेंगे? द रेडियल मसल्स आर गोइंग टू रिलैक्स। व्हेन the circular muscles would be relaxed, the radial muscles are going to contract, right, pulling the lens out so that it could become dilated. Make sense? Not the lens, the pupil, right? So this is the control of entry of light. Is there any problem so far? किसी को कोई मसला? Okay, now, so अब ये पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास क्या होती है? It's basically focusing and accommodation. अच्छा, what's focusing and accommodation? अगर तुम लोगों ने कभी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक DSLR, या फिर पहले सोनी के हमारे पास आते थे, सो वेन एवर यू जूम इन और जूम आउट, इवन इन योर फोन्स, तो जो अपर्चर होता है उसके साइजेस के अंदर डिफरेंस आता है। द वेरी सेम वे और द वेरी सेम केस इज विद द आई। Our lens changes shape whenever we're looking at something that's nearby or something that's far away. ठीक है? Like for example, I have something written right here. And if I'm going to focus onto it, and jitna I'm going to bring it way closer, I will actually feel a pressure on my eyes. ठीक है? And when I'm going to look at something far, that pressure is going to be relieved. होता क्या है? Our lens accommodates whenever we're looking at something that is nearby. हमने कह दिया भाई near vision, or something that's far away, far vision. ठीक है? Exactly. नहीं, वो pupil reaction वो होता है मेरा बच्चा मोहित, that has to do with the entry of light, not with, when they're looking uh, away from something, or or when they're looking at something that's far or something that's near. वो अलग होता है, वो लेंस का वो है, we can't see it वैसे normally। होता क्या है, आसान अल्फाजों के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज करीब में देख रहे होते हैं ना, हमारा जो लेंस होता है वो छोटा और मोटा हो जाता है। और जब भी हम लोग कोई कोई चीज देख रहे होते हैं जो दूर हो, तो लेंस क्या होता है, लंबा और पतला हो जाता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई whenever we're looking at something that's nearby, the lens shortens and bulges out, छोटा और मोटा। ठीक है। And when we're looking at something that's far, the lens elongates, लंबा और पतला हो जाता है। ठीक है। कहने का मकसद क्या है? हमारे पास अगर मैं एक लेंस बनाऊं, सो whenever I'll be looking at something that would be nearby, मेरा लेंस ऐसा होगा। और whenever I'll be looking at something that's far away, मेरा लेंस खिंच जाएगा। ठीक है। अब now can you guys tell me what was the thing that was holding or keeping the lens suspended? Yep, yep. So now अब मुझे बात ही बताओ कि what holds the lens in its place? क्या चीज थी जो लेंस को होल्ड कर रही थी, सस्पेंड कर रही थी? कौन से वाले मसल्स, कौन से वाले लिगामेंट्स? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है। अब एक छोटी सी बात मुझे बता दो, अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स खुद कॉन्ट्रैक्ट करके खिंच रहे होंगे, लाइक इफ दे वुड बी कॉन्ट्रैक्टिंग, would the lens thin out, or would it bulge out? If the suspensory ligaments themselves are contracting, if they're becoming taut, खिंचे हुए होंगे, तो लेंस खिंचेगा या फिर मोटा हो जाएगा? It's going to become thin, and that's all what we need to remember. बाकी सब चीजें ऑपोजिट हो रही होंगी। अब इसको यहाँ देखो। तो अगेन हमारे पास ये अकोमोडेशन दो चीज़ों के हाथ के अंदर है। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट्स कंट्रोलिंग दिस आर द सस्पेंसरी ligaments. Now, when the suspensory ligaments would be contracted and would become taut का मतलब क्या हुआ? खिंचे हुए। तो लेंस भी खिंचा हुआ हो जाएगा।
और जब हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो हमारे पास लेंस क्या हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाएगा। ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट कंट्रोल्स दिस इज योर सीलियरी बॉडी, और ये बिल्कुल सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ऑपोजिट काम कर रही है, दे विल स्लैकन बेसिकली। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा here whenever the lens is thinned out, the suspensory ligaments contract, and what do they become? They become taut का मतलब क्या होता है, खिंचे हुए। And whenever when we're looking at something that's nearby, suspensory ligaments हमारे पास कैसे हो जाएंगे, suspensory ligaments are going to relax and slacken, become flaccid, इस तरीके से। सीलियरी बॉडी बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है। अब तुम लोग मुझे बताओ, जब हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो सीलियरी बॉडी क्या कर रही होगी, रिलैक्स। वेरी गुड। अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, यहाँ मेरे पास जो सीलियरी बॉडी है वो कुछ इस तरीके से रिलैक्स हुई हुई है, राइट। ओके। और जब हमारे पास सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर रहे होंगे, तो सॉरी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स कर रहे होंगे, तो सिलेरी बॉडी कैसी हो जाएगी, इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? नाउ दीज आर द टू थिंग्स दैट मोर कॉमनली, यप, बिल्कुल अरफा, दैट दिस एंट्री ऑफ लाइट एंड फोकसिंग एंड अकोमोडेशन, ये सबसे ज्यादा हमारे पास पास्ट वर्ड्स के अंदर आता है। ठीक है। अब बस एक आखिरी बात देख लो बिफोर वी गेट डन विद दिस चैप्टर। लेट्स टॉक अबाउट rods and cones. अच्छा, हमारे पास rods and cones क्या है, they're modified neurons that act as receptors। ठीक है। rods कैसी दिखती हैं? So for example, if I were to talk about the rods look like this. So they have a nucleus, they're modified neurons by the way। तो इनकी सेल बॉडी ऐसी होती है, और ये इनका एक्सॉन आ गया। ठीक है। And this axon is going to go towards the brain, right, in the from the optic lobe. What do they detect? They detect light intensity. Rods detect light intensities. For example, if you would be out on a beach under a moonlight, so we won't be able to see that the sea is blue in color, the sky is not going to be blue, the sand is not going to be golden. Everything is going to appear black and white. Let's say if the only light source is the moonlight, you would be able to see clearly, लेकिन कलर्स नजर नहीं आ रहे होंगे। बस ये दिख रहा होगा कि अच्छा भाई ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें कितनी ज़्यादा नजर आ रही हैं, कितनी कम नजर आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इफ इट बी अ वैक्सिंग मून, और सॉरी अ वेनिंग मून, तो कम नजर आ रहा होता है। ठीक है। यस, रिसेप्टर्स है ना मोहिब, तो रिसेप्टर्स के बारे में हम लोगों ने क्या बात करी थी, कि हमारे पास जितनी भी एनर्जीज हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉक्लिया होता है हमारे उसमें एयर्स में, वो लाइट एनर्जी को, वो सॉरी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। ठीक है। वो करता है, खैर दैट्स सेकेंडरी। तो बेसिकली रॉड्स हमारे पास लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आती हैं कोन्स। कोन्स आरजीबी के अंदर चल रही हैं, रेड ग्रीन ब्लू, राइट। और कोन्स क्या करती हैं, कोन्स हमारे पास कलर को रेड करती हैं। खैर बहुत बड़ा हो गया, ड्रॉ शॉर्टर वन, राइट। अब हमारे पास अलग अलग कलर्स कैसे फॉल करते हैं, वट एवर द लाइट इज फॉलिंग। ठीक है। श्योर बेटा, आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है। सो व्हाट डू द कोन्स डू?
these cones, they detect colors. राइट, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास ना ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ब्लू लाइट ज़्यादा है, तो वो कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो बस that's it, that's all what we're supposed to know, and with this we're done with this chapter, we're done with the eye.